तो भाई हम लोग हैं इस वक्त, it's a palace like, but It's a palace, but it's rebuilt. rebuild it, okay. And look at Ronia again. Dinner, German dinner with Ronia. Good morning guys with Ronia. Hello. तो भाई मैं हूँ इस वक्त रोनिया के साथ. शी इज हियर अगेन. Hi. इट्स हर हाउस. हाँ. तो भाई मैं सुबह इनके घर पे आया हूँ, रात को डिनर किया था इनके साथ. तो कुछ खास नहीं था दिखाने खाने को, और वैसे भी बैटरी एंड थी तो डिनर रिकॉर्ड नहीं कर सका. आई एम टेलिंग देम आई डिड नॉट डिड द रिकॉर्डिंग विद हर फॉर डिनर बिकॉज द बैटरी वाज लो. My battery also was low because of the flight. Very good coffee. And see guys, she prepared for me many stuff. Huh? Look at this. Especially this. This is Baumkuchen. Yeah, my eyes are fixed on this stuff. Later I will try guys. So let me finish my breakfast. Ronnie, you wanna say something? Enjoy your Baumkuchen. And do you remember her guys? Where we met in Uzbekistan. You remember? It's a small she world. had a lot of videos with me. If you did not see, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उज़्बेकिस्तान की सीरीज में जाके रोनिया से मिल सकते हैं. तो मैं हूँ इस वक्त जर्मनी में रोनिया के घर पे. तो जब हम बाहर जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे. तो भाई इनकी नानी अम्मा ने ये गिफ्ट इनको भेजा है. ये दरवाजे हैं, इसके अंदर तस्वीरें होती हैं, अंदर कैंडल जलती है तो वो जो तस्वीरें हैं वो नज़र आती हैं. मतलब ये स्पेशली बच्चों के लिए, लेकिन ये अभी बड़ी हो गई हैं तो ये अपनी नानी अम्मी के लिए तो बच्ची हैं ना, तो वो पोस्ट से इनको भेजते हैं. इन नॉर्मली ये होता है चॉकलेट, इसके अंदर एक दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर से चॉकलेट निकलती है. ये बच्चों के लिए होता है, लेकिन बड़ों के लिए चॉकलेट नहीं, खाली तस्वीरें. लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, जैसे हमारे यहाँ ईद पे ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये लोग भी ऐसे करते हैं. तो ये है स्पेशली, इट्स फॉर स्पेशली इन जर्मनी और एवरीवेयर इन द क्रिश्चियंस. I don't know actually. I just know that in Germany we have it a lot. So when I was a kid, maybe like everybody would give a calendar to me. So I would have 3, for example. Okay, like right. all my grandparents or All something right, like that. okay. Did you see the grandparents from your father's side or no? I saw all the grandparents all the Okay, time. that's great. So you Like were every weekend I would be visiting. And how many siblings you have? Well, I have 1/2 sister. 1.5 sister? No, one, like she's... My mother is also her mother, but we have different fathers. Okay. So you're going to meet which father now? No, my father, not her father. Okay. He's not. We are not related. Okay. But still, I'm talking to him. He's part of my family, but Of course. Right. Yeah. Sure, I can imagine. So you were the lucky girl because everybody have attention to you because you were alone. Because my little sister is also 15 years younger than me. Okay. So when I was a kid, I was alone. Okay. But then when I was already like a teenager, then she came. Okay. All right. Okay. तो भाई ये थी स्टोरी जो आपको सुना दी है. तो आज का दिन है रोनिया के साथ. तो हम जाएंगे थोड़ी देर बाहर, आपको दिखाएंगे हम कहाँ घूमते हैं. Like that people could understand in all Germany. Before they had like dialects everywhere. Right. तो भाई जो कह रही सुन लो, मैं ट्रांसलेशन नहीं कर सकता. ओके. सो रेनिंग, कैमरा गीला हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये गीला ज़रूर हो जाएगा. तो मिलते हैं कहीं चल के किसी और जगह. तो भाई हम आ चुके हैं इस पहाड़ी के ऊपर. ये बंकर टाइप इन्होंने पहाड़ी बनाई हुई है जहाँ पे जंग के दौरान लड़ा जाता था या लोगों को रखा जाता था. तो यहाँ से सिटी व्यू कुछ ऐसा है. अगर आप आते हो तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करो. तो भाई ये है यहाँ की, what we can call it, Christmas market. Yeah, inside the Berlin Palace. Okay, inside the Berlin Palace. Or actually now it's called the Humboldt Forum because Okay, it's a museum. Okay. It's not a palace anymore. But it looks like a palace. तो भाई हम लोग हैं इस वक्त, it's a palace like, but It's a palace, but little- it's rebuilt. rebuild it. Okay. And it's now one kind of museum as well.
Yeah, there's a lot of museums in here now, like the. In whole building, many museums. Yes, many different museums. it's For like example, a- there's the sculpture hall Okay, so with the old sculptures from the historical building. तो भाई मैं इस वक्त हूँ पैलेस में। यहाँ ये पैलेस है यहाँ का, बर्लिन सिटी का। और लोग आप देख सकते हो बारिश में भीगे हुए हैं और स्टिल बारिश हो रही है। हम एक बड़े हाई पॉइंट पे गए थे, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, पीछे आपने शायद देखी हो। और ये हम तकरीबन हाउ लॉन्ग वी आर वॉकिंग इन द रेन? Maybe 1.5 hours. नो 2 आवर्स। Oh, तो 2 घंटे से भाई हम लोग वॉक कर रहे हैं इस बारिश के अंदर। बहुत ही मज़ा आया है, पूरा एंजॉय किया है। amazing rain. Yeah. First time 2 hours walk in this kind of rain, and still my jacket can manage to control the drops, the water. तो भाई Not completely soaked. आपको दिखाता हूँ कैमरा चेंज करके, ताकि आपको पता लगे कि हम किस जगह पे, कैसी जगह पे घूम रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप हमारी हालत तो देख ही चुके हो। A little bit of it. Okay. That will be great as well. Maybe we can also eat something here. There was also spätzle there. Okay. It's a kind of traditional noodle with a lot of cheese. Okay. That's great idea. It's something like a German food for yes, me, it's you very know. German. Yes. And I don't have an issue like a halal or something. No. Yeah. And it's also tasty. Oh, right. That's great idea. तो भाई इस किस्म की ये बिल्डिंग है। It's look like a new moderate building, you know. I mean, it is, but just some parts of the facade are just. Yeah, it still look like old stuff, statues, and look like a monument. You have the initial letters of the king's names there in okay. gold. Okay. It's a real gold. Frederick. It's real gold. It's a real gold or what? No. Maybe it's just gold. Okay. तो भाई ये लॉकर हैं, 1 यूरो डाल के ये लॉकर लेके आपकी जैकेट और बैग यहाँ छोड़ के जाना है। क्योंकि अभी जो है हम लोग नॉर्मल ड्रेसिंग, बिफोर वी वाज इन स्पेशल ड्रेसिंग, राइट? तो चलते हैं म्यूज़ियम देखते हैं, अभी बंद होने वाला है यहाँ। तो भाई कुछ इस टाइप का ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे पुरानी चीज़ें, लेकिन ये टीवीज़ में भी तस्वीरें पुरानी ही दिखा रहे हैं। चलें थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। या वी कैन शो अप समथिंग, फ्यू थिंग्स, very little light. And how about this? Like African stuff, clothes. तो जी कोई इस तरह का म्यूज़ियम है। मैं आपको मज़ीद बोर नहीं करूँगा, तो जस्ट शो यू अप व्हाट वी डिड टुडे। तो इस तरह के स्टैचूज़, मुजस्मे, इट्स लाइक रियली अफ्रीकी स्टफ। तो भाई ये इस किस्म के मास्क उस ज़माने में लोग पहनते थे, ये इनके पास हैं। और ये अब सोच रहे हैं कि उनको वापस कर दें ये चीज़ें, क्योंकि ये उनकी हैं। तो इन लोगों ने जो ली हुई हैं या छीन ली हुई हैं या जो भी है, ये देख सकते हो आप। इस किस्म का ये म्यूज़ियम है। तो आप देख सकते हो ये सब फ्री है, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये लकड़ी से बनाया गया है। तो ये आप मैप देख सकते हो, ये इन कंट्री से बिलोंग करती हैं। दिस इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट्री वीडियो, राइट? तो भाई हमने म्यूज़ियम घूम लिया है। यहाँ पे ज़्यादातर अफ्रीकन चीज़ें हैं, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। और ये वो म्यूज़ियम है जहाँ पे जर्मनी ने जो जर्मन कॉलोनीज़ थी, तो उसकी जो नवादरात हैं या जो यूनिक चीज़ें हैं वो इन्होंने रखी हुई हैं। ये सोच रहे हैं उनको वापस करने के लिए, देखें क्या करते हैं। बट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू विजिट, एंड दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ म्यूज़ियम। I think how many museums in Well, this? maybe like 5 or so. 5? 5 different museums. Yeah, like the ethnological museum, and then something about natural history and. So it's if you're a museum lover, you can spend like a couple of days in this Yes, building I to think so. how she is.
Yeah, she's from another planet. She's very into read and look for what is this and how long and this and that. I think she's a scientist. तो भाई ये वो नूडल्स हैं जो हम खाने लगे हैं। ये लाइक मोटी वाली सेवियां लगा लें आप, और ये एक गैबज के साथ है और एक जो है चीज़ के साथ है। तो इट्स लाइक अ टिपिकली जर्मन फूड। So we're going to eat that, which is cost each 10 euro. एक का 10 यूरो है। तो आज का डिनर यही होगा। देखते हैं कैसा टेस्ट होता है इसका। लेट्स सी। तो ये है इसकी प्राइस की। So guys, this is a dinner for us tonight. तो भाई ट्राई करते हैं कैसा है डिनर, जर्मन डिनर विद रोनिया। ऊपर उन्होंने फ्राइड प्याज जो है वो डाला हुआ है, और ये आई थिंक दिस नूडल्स फ्रॉम पास्ता। Yeah, like it's kind of noodles fun. Yeah, but guys, it's tasty and it's really famous dish. What is the name of this Käsespätzle. in English? I don't know. Same. Say it like slowly. Käsespätzle. Ah, okay. Thank you. Sorry. तो भाई ये है दूसरी क्रिसमस मार्केट along the TV tower. And look at Ronia again. And then look at this. Amazing. तो भाई आज हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। अभी हम हैं दूसरी क्रिसमस मार्केट में। आज तकरीबन 5 What time now? I think it's like 8. Yeah, it's already 8. So भाई almost 5 hours we are like walking all over the city. So look at We are TV a bit tower wet. on the back. Yeah, one time wet and then dry in the museum and then again wet. So just wanna finish. So भाई अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये देखिए ज़रा मेरे बैक में ये व्हील, ये यहाँ पे इट्स ओनली फॉर क्रिसमस टाइम राइट। Yes, only. तो ये स्पेशल क्रिसमस टाइम के लिए है, और मैं हूँ इस वक्त बर्लिन सिटी में। यार अगर आप लोग इस जगह आते हो ना इस मौसम में या इस सीज़न में, तो क्रिसमस मार्केट ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यहाँ के ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, फूड, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ मीट या पोर्क या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो जो आप खा सकते हो। तो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई लव इट एंड थैंक्स टू रोनिया, शी लेट मी हैव दिस अपॉर्चुनिटी। Try the egg mock. एग मॉक, Next time. या एग मॉक, आई डोंट नो क्या है ये, लेकिन यू शुड ट्राई गाइस। सो थैंक्स टू रोनिया बिकॉज शी इज़ आउट ऑफ वर्क, शी डोंट हैव एनी वर्क, सो शी गिव मी वेरी गुड कंपनी लाइक अ VIP. थैंक्स टू हर। बाय बाय, लव यू गाइस। मिलते हैं कल नई वीडियो में विद नए दिन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।